Good morning, beta. Let's continue with the MCQs of chapter 1. Chapter 1 we have done from the book. You please revise all the examples and read the introduction from the book also so that your concepts will be clear. Okay. So first question is, on a number line, when we add a positive integer, we move to the right, to the left, do not move at all, yeah, none of these. Yes, Akshita. Ma'am, move to right. Yes, when we add, we always move towards the right. And when we subtract, we move towards the left. On a number line, when we add a negative integer, we move to the right, move to the left, do not move at all, and none of these. Ma'am, move to the left. Yes, we will move to the left. Actually, आप ऐड कर रहे हो दैट्स ओके, बट नंबर जैसे सपोज आपके पास 1 है, आप 1 के अंदर ऐड कर रहे हो -2, आप 1 के अंदर आप यहाँ पे 1 लिखा आपने, आप 1 के अंदर प्लस कर रहे हो -2, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा -1, यही आएगा ना। लेकिन आप थे तो राइट साइड पे, 1 का मतलब क्या है, यू वर ऑन द राइट साइड ऑफ 0, एंड व्हेन यू हैव एडेड -2 वी हैव शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ 0. Okay, so we will move to the left. Okay, is it okay? Next is on a number line, when we subtract a positive integer, we move to the, yes beta, on a number line when we subtract, आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज आपने 1 लिखा, आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 2 को, योर आंसर इज -1. when we subtract a positive integer, okay, when we subtract a positive integer, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +2 को, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, आंसर विल बी -1. ठीक है, तो वी मूव टू द राइट, टू द लेफ्ट, या डू नॉट मूव, क्या आंसर आएगा? यस गुनीत, व्हाट विल बी द आंसर? Left. हाँ जी, Move to the left. मूव टू द लेफ्ट. Left. Okay, yes, we move to the left. Question number 4 is, on a number line, when we subtract a negative integer, we move. जब हम बेटा subtract करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? आप subtract कर रहे हो नंबर लाइन पे, आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, आपने सपोज करो ऐसे नंबर, वेट, आपने ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन पे आपका ये नंबर 0 है, यहां पर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव इंटीजर. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप किस साइड पे मूव करोगे? आपको पता है सब्ट्रैक्शन के केस में, जैसे 1 है, 1 में से आप -2 कर रहे हो, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बेटा? -1 आएगा, आंसर विल बी -1. सो आप 1 पे थे, आप यहां पर थे, आपने सब्ट्रैक्ट किया, आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, तो हम कहां जा रहे हैं? मूव टू द लेफ्ट. इज इट ओके? मूव टू द लेफ्ट. आंसर मूव टू द राइट आ रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट. अच्छा, नेगेटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, आपने नेगेटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट किया बच्चे, क्या मतलब है इसका? आपने पहले पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव के अंदर
पॉजिटिव लिया आपने 1, उसके अंदर से माइनस कर रहे हो -2, तो क्या हो जाएगा वो 1 में से -2 कर रहे हो, 1 + 2 कितना आ गया 3, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू द राइट। एक्चुअली नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। Yes, Anmol, can you give some example related to this? Yes, ma'am. Give some example related to the same example that I have given. Question number 5. When two positive integers are added, आपने 1 और 2 positive integer ले लिए, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर will be yes, Jasleen. Suppose I have taken 2 positive integer 1 and 2. When you add them, get Positive integer. yes, it will be 3. That is your positive integer. Next is when two negative integers are added. You have taken two negative integer, -1 and -2. When you add these two negative integer, what will be the answer? When you add two negative integer, what will be the answer? Yes, Akshita. If you take -1 and -2, if you add them, your answer is -3. You will get a negative integer. Which of the following statement is wrong? When a positive integer and negative integer are added, we always get a negative integer. कहता है जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हो, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. इज इट सो? आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया +1 +1 ले लिया, उसको आप ऐड कर रहे हो किसके साथ? ऐड कर रहे हो आप उसको -2 के साथ. क्या आंसर आएगा? आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर, दोनों को प्लस करोगे, आंसर विल बी -1. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है. एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8, ये भी ट्रू है. एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8, ये भी ट्रू है. फॉर सब्ट्रैक्शन वी add the additive inverse of integer that is being subtracted to the integer. So this statement will be, what will be the possible answer, beta? What will be the answer for this? Who will answer me? Yes, Lakshya. Yes, Guneet. मैम ए ऑप्शन. ए ऑप्शन आपको रॉन्ग वाली पूछा, रॉन्ग वाली. यस. बेटा रॉन्ग आंसर बताना है. Next is, which of the following is true? For this you have to solve each number. When you add, yes, hurry up, who will tell me the answer? Solve this and tell me the answer. इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का? फर्स्ट टर्म ऑन द लेफ्ट. फर्स्ट टर्म का आंसर आएगा -12. सेकेंड टर्म का आंसर आएगा -4. So is this greater, is -12 greater than -4? Yes, Arpita. Harman. Can you answer this? Is first statement true? Is first statement true? Yes, Drishti. No, ma'am. First statement is not true. B is true. B is true. That is -12
and minus 4. Okay, second part B is true. So let's check the answer of this part. So B part is the answer. Okay. Next is the product of two negative integer. आपने -1 लिया, आप -1 ले लो, -1 को आप मल्टीप्लाई कर लो, आप -1 ले लो, -1 को आप मल्टीप्लाई कर लो, स्टार यू नो दैट इट इज मल्टीप्लीकेशन, -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी yes Akshita, what will be the answer of these two numbers when you multiply them? Yes Prabnoor, when you multiply -1 and -2 the answer will be yes 2. answer is 2. The product of two negative integer is a positive integer, is a negative integer, either a positive or a negative or none. What's the answer from these four options? Positive integer. Yes, it is a positive integer. So your answer is a positive integer. The product of three negative integers. You have taken three negative integers this time. If you take the product of three negative integers, your answer is like -1 multiplied by -2 multiplied by -3. Then we will get answer -6. -6. Answer is negative integer. MB. Okay, mute yourself. Yes, next. Arpita. Akshit. Nandini. Sanya. Manraj. Satvik. Arush. When you multiply -1, -1, 10 times, 10 is your even number. So when even number of times you are multiplying this number, so your answer will be yes. Ma'am, A option. A option +1 is answer. Yes, ma'am. Okay, next question. Akshita will answer. Yes, Akshita. Yes, ma'am. If you multiply -1 5 times, then the answer will be 5 is odd. So your answer will be -1. yes, it's -1. Good, beta. Next, if I multiply -1, 2m times. 2m times मतलब even. 2m का मतलब क्या है? 2 multiple of 2 है ना? 2m का मतलब है 2 का multiple. कोई भी नंबर आप लेते हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इट विल बिकम इवन नंबर. Even number of time if you add, the answer will be +1. अगर आप उसको 2m + 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, जो 2m होता है ये इवन को रिप्रेजेंट करता है, +1 जो होता है ये ऑड को रिप्रेजेंट करता है, देन आंसर विल बी -1. आंसर विल बी -1. बेटा 2m का मतलब है इवन मल्टीपल्स और 2m + 1 का मतलब है ऑड, तो आंसर विल बी -1. यस, नेक्स्ट हार्दिक भूटानी, अनमोल, श्रेया, वैभव. Ma'am, next answer is 100. Beta, your name is? Ma'am, Anmol. Okay. Mute yourself. Next answer of this question is 100. Next is -30 into 20. Answer of this question is
Who will answer me this question? Shreya, Hargun, Sanchit, Ridhima, Saksham, Himanshi. Yes, Himanshi. Ma'am, minus 600. Minus. 600. Yes, good beta. 600. Minus 600. When you multiply 3 with 0, then answer will be yes, sir, Vyapak. When you multiply 3 with 0, your answer is yes, Arpita. 0. Answer is 0. Ma'am, 0. And yesterday we have discussed if we divide 0 by 12, then answer is 0 divided by 12 will give you 0 and 12 divided by 0 will give you not defined. What's the answer of 23rd question? Minus 10 multiplied by 0 multiplied by minus 15. Answer is yes, Saksham. Yes, Manraj. Ma'am, D option. D option, beta, it's wrong. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, then answer will be 0. Answer will be 0. So the correct answer is A part, that is 0. A option. The integer whose product with minus 1 is 0. You have to tell me the integer which when multiplied with minus 1 will give you 0 as answer. Yes. Yes, Arshia. 0. Yes, it will be 0 क्योंकि 0 को जब आप minus 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 चाहिए. ठीक है, तो 0 उसमें से एक नंबर 0 होगा. The integer whose product with minus 1 is 1. आपने एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसको minus 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आए. आंसर 1 आना चाहिए. हाँ जी. Yes, Anmol. Ma'am, -1. Yes, yes, exactly. It's -1. क्योंकि -1 into -1 minus minus plus हो जाएगा. Answer will be 0. Answer will be 1 only. Answer of this 26th question. 10 divided by -2. Shreya, Tanya, Naman, Vaibhav. Yes. Ma'am, answer is 5. Answer is 5. 10 divided Yes, ma'am. 5 is. आप 10 को -5 से डिवाइड कर रहे हो. क्या आएगा आंसर? 10 को आप -5 से डिवाइड कर रहे हो. क्या आएगा बेटा? आप 10 को डिवाइड कर रहे हो. Divide means slash by -5. Answer is 5 ones are 5, 5 twos are 10. Answer is -2. So C part is the C option is correct. C option. C option is correct. Now -6 divided by -3. Vaibhav, can you try again? Vaibhav, can you tell me the answer of this question? Yes, Vaibhav.
-6। मैम एक मिनट मैम सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ जी कर लो, आई एम वेटिंग। ओके डू इट। मैम 2. Yes, yes, very good. Answer is 2. -5 divided by 1. -5 divided by 1. Tarun, Chub. Again, same students are giving answers. Rest of the students are having rest. Hemant, Argun. Yes, anyone whose name I have taken just now? Okay, Samriddhi will answer. Yes, Samriddhi. मैम -5 is the answer. Yes, yes, very good. Answer is -5. Yes, who will tell me question number 30? Solve this. Yes, Rivya, can you answer? Ma'am, 16. Ma'am, sorry, 1. 1. 1. Answer is 1. 16 ko by which number 16 will be divided to get the answer as 16? So it should be divided by 1 to get the same number as answer. 31st question, -50 divided by x will give you 1. By which number should -50 be divided to give the answer 1? Yes, hurry up. Yes, Drishti. Ma'am, -50. Okay, yes, answer is -50. Now this x divided by 1 is equal to 8. Which number should be written at the place of x and will it be divided by 1 to get the answer as 8? Yes. Yes, Arpita. Yes. Ma'am 8. Yes. Value of x is 8. The additive identity for the integer. Angel. Additive identity for the integer. Ma'am 0. 0. Can you tell me the multiplicative identity also? Ma'am 1. 1. Okay. Good. Next वही question था. Can you tell me the name of this property? Who will tell me the name of this property, beta? Yes, Manraj. Ma'am, What's the name of this property? ma'am, distributive. Okay, thank you. Good. Chalo. Manish deposit rupees 2000 in the bank account and withdraw rupees 1000 from it on the next day. Find the balance. Find the balance. Can you tell me the money deposited is represented by which integer? Deposit will increase your balance, so it will be added. Withdraw will reduce your balance, then you will subtract it. Yes, Akshit. Ma'am, 1,000 rupees. Very good. Where were you from the last so many days? You are not giving any answer. Ma'am, sorry. No need of sorry, but you should be attentive in the class. I want you to answer each and every question. Okay, beta? Okay, ma'am. Next is, beta, with this we have finished the MCQs of this chapter.